Hello children, welcome to English class. In our today's English class, we are going to study Chapter 6, Sympathy. What is the meaning of sympathy? Sympathy means the feeling of compassion. It means to feel others' pain, to feel bad about someone's sadness, someone's bad situation, and to feel empathy. Okay, so we can say feeling bad about someone for the bad situation that person is facing. In Hindi, it means किसी के लिए संवेदना, किसी के लिए दया रखना. Okay, so sympathy in Hindi, we can say it is the feeling of daya. It is the feeling of samvedana. Okay. This is a beautiful poem written by Charles Mackay. The poet describes the beautiful feeling, the pure feeling of sympathy. Sympathy means the feeling of compassion. किसी के प्रति दया भावना, किसी के प्रति संवेदना. Okay, so this feeling is explained very beautifully. In the first stanza, the poet writes, I lay in sorrow, deep distressed. I was in very bad situation. I was feeling very sad. I was stressed out. Okay. I lay in sorrow and deep distressed. My grief a proud man heard. A proud man heard my sad story. He saw my bad situation. That man was very rich. Okay, that proud man was very rich. A proud man heard my sad story. His looks were cold. He gave me gold. His looks were cold. He was not having any expression. Okay, he was not having the feeling of compassion, feeling of sympathy. He was very cold. Okay, unaffected. He gave me gold. He gave me a piece of gold. But not a kindly word. He didn't say any kind words to me. कुछ काइंड वर्ड्स उसने यूज़ नहीं किए, कुछ अच्छा बोला नहीं, मुझे करेज नहीं दिया. ओके, ही डिडंट स्पोक एनी काइंडली वर्ड्स बट ही गेव मी गोल्ड. इसका मतलब है जब मैं दुखी था, मेरी बहुत ख़राब परिस्थिति थी, तब एक प्राउड मैन, एक अहंकारी जो आदमी है, वो रिच भी था, उसने मेरी सिचुएशन देखी और मुझसे कुछ अच्छे शब्द, कुछ दो मीठे शब्द मुझसे बोले नहीं और मुझे सिर्फ एक गोल्ड का पीस दे दिया. ओके, माई सॉरो पास्ट, आई पेड हिम बैक. मेरी दुख की परिस्थिति, मेरी खराब परिस्थिति से जब मैं बाहर आया, निकल कर बाहर आया, आई पेड हिम बैक, तब मैंने उसे वापस लौटा दिया. गोल्ड मैंने उसे वापस लौटा दिया. My sorrow passed. When my sorrow passed, I paid him back the gold he gave to me. उसने जो मुझे दिया था गोल्ड, वो मैंने उन्हें रिटर्न कर दिया. Then stood erect and spoke my thanks. सीधा I stood straight. मैं सीधे खड़े रहा, straight रहा और मैं थैंकफुल हूँ, वो मैंने उसे एक्सप्रेस किया. दैट आई एम वेरी थैंकफुल, थैंक यू फॉर योर हेल्प. ओके, देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी. आई ब्लेस्ड हिम फॉर हिज डोनेशन, फॉर हिज चैरिटी. मैंने उसे
थैंक यू कहा कि आपने मेरी हेल्प की, इसलिए थैंक यू. इन द थर्ड स्टैंजा, आई ले इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड पेन. जब मेरी खराब परिस्थिति थी तब मुझे कुछ और भी ज़रूरी चाहिए था. ठीक है, बेसिक जो नेसेसिटी होती है वो भी मुझे चाहिए था. आई लेड इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड पेन. ओके, उस परिस्थिति में, जब मेरी खराब परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में अ पुअर मैन पास्ड माई वे. अ पुअर मैन ऑल्सो सॉ दैट आई वॉज इन अ बैड कंडीशन. ओके, अ पुअर मैन सॉ दैट आई वॉज इन अ बैड condition. I was very sad. That man was poor, but his heart was very big. Okay, a poor man bound my head and gave me bread. That poor man gave me bread. He gave something to eat. Okay, that is the basic necessity, right? That poor man saw my condition. He gave me courage. He spoke kind words to me. He gave me bread. He watched me night and day. Okay. He saw me. He spoke kind words to me. उन्होंने मुझे हौसला दिया, courage. Okay. He gave me hopes. He gave me bread. And he looked after me. He took care of me. उन्होंने मुझे मेरी दिन रात मुझे देखा और मेरी हेल्प की. ही बहुत अच्छे शब्दों से मुझे हौसला दिया. ही स्पोक काइंड वर्ड्स टू मी. फोर्थ स्टैंजा, हाउ शेल आई पे हिम बैक अगेन. आई पेड द मैन हु गेव मी गोल्ड, बट हाउ डू आई पे दिस पुअर मैन. जिनका हार्ट इतना बड़ा है, जिनके पास खुद पुअर है, तो फिर वो हमें क्या दे सकते हैं बेस्ट. वो हमारा ध्यान रख सकते हैं, हमें कुछ अच्छे वर्ड्स बोल सकते हैं, हमें खाने को भी उसने मुझे ब्रेड दिया. सो हाउ कैन आई पे हिम बैक. पोएट सेज आई कांट पे हिम बैक फॉर ऑल दैट ही डिड टू मी. ओके, हाउ shall I pay him back again for all he did to me. I can't pay, poet is saying. Oh, gold is great, but greater far is heavenly sympathy. Yes, gold is great, but more than gold, the feeling of sympathy, right? He had a sympathy for me. He had a feeling of sympathy for me. So I can't pay back. Okay, feelings can't be paid. Feelings are priceless. Gold can be paid. I can give him back. I gave him back, in fact, but the feelings can't be paid. Okay, the sympathy he showed towards me, the courage he gave me, the kind words he said to me can't be paid. So children, in this poem, the poet very beautifully explains the importance of feelings, the importance of the way you treat others, right? So always we should show sympathy towards others. Okay, the feelings can't be paid. They are priceless. Okay, here we end our session. Hope you all understood. If you have any queries, do contact me between 8:30 to 12. Okay students, bye, take care.